Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now let us look at the two important concepts which we have discussed earlier, that is specialization and assortment. Specialization is a fundamental driver of distribution efficiency. Some businesses can introduce economies because they perform some functions better. So the logic of specialization is based on economies of scale and scope. Now that is important. Specialization, अगर कोई ऐसा channel member है who is actually specialized in doing something, जैसे हमने एक example भी consider की, that example was of the advertising company which actually becomes the part of the channel structure. क्योंकि manufacturer के लिए it is difficult to actually perform the function of advertising. So specialization for manufacturers, it can create economies of scale as well as economies of scope. So when you have variety of products, you would be looking at economies of scope rather than looking at economies of scale. So specialization becomes important. एक case consider कर लेते हैं. Manufacturers directly retailers को अपनी product distribute कर रहे हैं. अब इस केस में retailer would be taking number of items from different manufacturers, different specialized manufacturers. Speciality है different manufacturers की कुछ produce करने के लिए. Now afterwards, let's say if some wholesaler is involved in it, एक wholesaler अगर इसमें involved हो जाए, वो bulk quantity manufacturer से ले और उसे distribute करे towards the retailers, तो it becomes more appropriate. ऐसा हो सकता है कि that specialized wholesaler would make that channel structure more effective in terms of cost, total transaction cost, as well as more effective in terms of efficiency, time efficiency. आपकी distributional efficiency increase हो सकती है. So it would be based on these economies of scale as well as scope. ऐसा नहीं है कि एक channel member को add करने से it will always increase the cost. There is a trade-off between the cost and the efficiency and the benefits which that channel will actually get from that specialized member. So assortment is more efficiently achieved through specialization. Assortment is the process of creating and positioning a mix of products desired by a customer. एक customer जो products require कर रहा है, उनको correctly position करने का नाम है. What type of products are actually required? Let's say in a product you have different colors. Customer के हिसाब से, उस market के हिसाब से, if 3 colors are more important, you need to sort them out. You need to assort them. ये भी एक speciality है. So customer के desire के मुताबिक you are actually provided that product. That is actually known as the assortment. So there are 3 basic steps in assortment. That is concentration, customization, and dispersion. Now let us look at concentration. Actually, concentration refers to the collection of large quantities of a single product or several different products so that they can ultimately be sold as a group. ग्रुप के तौर पे आप उसे सेल कर रहे हैं. लार्ज क्वांटिटीज आपने या तो सिंगल प्रोडक्ट की पिक की है या बहुत सारी प्रोडक्ट्स की एक बल्क क्वांटिटी पिक की है. मैंने आपसे क्या कहा, लेट्स से एक मैन्युफैक्चर, देयर आर 3 मैन्युफैक्चरर्स एंड 3 रिटेलर्स, और वो तीनों मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उन रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहे थे. तो अब मैन्युफैक्चरर वुड एक्चुअली वांट टू सेंड द बल्क क्वांटिटी टू दोज रिटेलर्स, और रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बल्क क्वांटिटी को सॉर्ट करना that is difficult. So the proposition was to add the wholesaler. आप एक wholesaler को add कर दें, एक ऐसा wholesaler who will work as a merchant wholesaler. वो products लेगा, bulk quantity लेगा, उसको as required by the retailer according to the market demand उस हिसाब से segregate करके दे देगा. तो concentration would be to taking that bulk quantity and then afterwards segregating it according to customer requirement. Now let us look at this channel structure. There is no intermediate party in it. Manufacturer is directly involved with the retailers. We have
6 retailers with us and 3 manufacturers. So there are total 18 transactions involved in it. अगर आप देखें तो total 18 transactions बनती हैं. एक मैन्युफैक्चरर के लिए 6 ट्रांजैक्शंस बन रही हैं, तो 3 मैन्युफैक्चरर्स के लिए देयर इज टोटल ऑफ 18 ट्रांजैक्शंस, 18 ट्रांजैक्शंस हुई हैं. नाउ लेट अस ऐड अ होलसेलर, दैट इज द स्पेशलाइज्ड मेंबर हु विल बी सॉर्टिंग द बल्क फॉर द रिटेलर्स. उसको ऐड करते हैं. वन इंटरमीडिएट पार्टी. नाउ यू कैन सी हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस एक्चुअली वी हैव 6 plus 3, 9 transactions. 3 transactions from manufacturer to wholesaler, and then 6 transactions from wholesaler to retailer. We call this the principle of minimum transactional cost. Principle of minimum transactional cost. Now, actually, what happened? जब आपके पास कोई इंटरमीडिएट पार्टी नहीं थी तो टोटल 18 ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से बन रही थी. नाउ दिस इज लाइक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ रहे हैं, एक स्पेशलाइज्ड चैनल मेंबर को ऐड किया, आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम हो गई. नाउ देयर आर ओनली 9 ट्रांजैक्शंस कंपेयर्ड टू 18 व्हेन यू वर गोइंग फॉर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज वन सिंपल एग्जांपल which will clarify the specialization and assortment scenario. So, customization. Now we come to customization. Customization is the process of sorting and grouping products into unique combinations. Unique combination बना देना. यहाँ पर the thing which is important, जब customization को आप रेफर कर रहे हैं, तो you are actually talking about different segments of customers. Customers के लिए, according to the customer requirement, हर segment of customer would have different requirement, and for that different requirement, they need a different product, different group of or different package of product. So that unique product, वो grouping of different items into that unique product for different customer segments is actually known as customization. So beneficial as it has lower transportation cost. अगर ये wholesaler जो एक specialized or some merchant wholesaler is there, which is a specialized party in the channel structure, वो चैनल मेंबर अगर कस्टमाइजेशन करके दे सकता है बिकॉज ही इज स्पेशलाइज्ड टू डू इट, देन इट विल एक्चुअली लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट आइटम्स आप वन गो में मंगवा सकते हैं, और उनको मंगवाने के बाद आपके पास LTL, लेस देन ट्रकलोड सिनेरियो भी नहीं रहेगा. सो यू हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर लाइक grouped together in a bundle in such a way that it is according to the customer requirement. So that would be actually lowering the total transportation cost. The third aspect was dispersion. Dispersion consists of shipping unique assortments to customers when and where required. Now, dispersion is actually the distribution. That is the physical distribution part of logistical activity. आप products को अपने डिस्पर्स कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं टू द कस्टमर्स व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड. ये जो उसकी टाइम बेस्ड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा रहा है. थैंक यू.